Good morning, students. Good morning, sir. Okay. देखो blackboard visual है clearly? Yes, sir. Okay. So, dear students, yesterday I have already discussed about how to write formula of mononuclear coordination entities. मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, उसके गाइडेंस के बेसिस पर सम इंपॉर्टेंट रूल्स में बता रहा था कल, आपको याद होगा। उसको फिर एक दो बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। सो द फॉर्मूला ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज are based on some important guidelines, in which I have discussed the first point, that at first we have to select the central metal atom in the given coordination entities. At first point, central metal atom is listed first. क्लियर? सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है सेंट्रल मेटल एटम को। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में कौन सा होगा सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम लोग सेलेक्ट फर्स्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, रिगार्डिंग द लिगेंड्स। Dear friends, yesterday I have already told you that the ligands present are written in an alphabetical order. Clear? Ligands present in the coordination entities are written in an alphabetical order. No problem regarding the ligands. Third point, I am going to discuss about the polydentate ligands, and same sequence is also followed in case of polydentate ligands. In case, for example, a particular ligand is abbreviated, in that very case the first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order. जो polydentate ligand का जो अब्रिविएशन होगा, उसका फर्स्ट लेटर के बेसिस पर ही हम उसको पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं लिखने के लिए। क्लियर? फिर रिपीट कर रहे हैं। इन केस ऑफ polydentate ligand, if they are abbreviated, like मैंने कल बताया था ना, EN, OX, GLI, like that. So the first letter of abbreviation is used to determine the position of the ligand in an alphabetical order. इसके फर्स्ट लेटर के बेसिस पर उसको हम लोग अरेंज करेंगे। Now I am going to discuss the fourth point. The formula of the coordination entity, including the central metal atom and all the ligands present, is enclosed in the square bracket. But in case some of the ligands are polyatomic, their formulas or abbreviations are enclosed in parenthesis. No problem. फिर रिपीट कर रहे हैं। The formula of coordination entity, including central metal atom and all the ligands present in the square bracket. But in case some of the ligands are polyatomic,
polyatomic like कह सकते हो H2O, NH3 like that. In that very case, the formula or abbreviations are enclosed in parenthesis, just like ऐसे रखेंगे इसको. That is the parenthesis. So formula or abbreviation of the polyatomic ligands that are enclosed in this parenthesis. This is the rule number 4. Now in rule number 5, रूल नंबर 4 एक बार फिर बताना, नोट कर लेंगे. किस पॉइंट को बोलने बोलो? यस सर. फोर्थ पॉइंट. यस सर. यस सर. Okay, okay, note करो. The formula of the coordination entirety, the formula of the coordination entirety including the central metal atom and all the ligands present, including the central metal atom and all the ligands present, is enclosed in a square bracket. Is enclosed in a square bracket. इंक्लूडिंग से रिपीट कीजिएगा. अच्छा अच्छा, हमने बताया इसमें including the metal atom and all the ligands present is enclosed in a square bracket. ऐसे रखते हैं, is enclosed in a square bracket. Full stop. But in case some of the ligands are polyatomic, but in case some of the ligands are polyatomic, so their formulas or abbreviations, so their formula or abbreviations are enclosed in parenthesis, just like ये हुआ parenthesis, are enclosed in parenthesis. PARENTHESES, parenthesis. Clear? Yes sir. Okay, okay. Now next point note करो. In the coordination sphere or entirety, in the coordination sphere or entirety, there should be no space between the central metal atom and the ligand. In the coordination sphere, there should be no space between the ligands and central metal atom / ion. No space between central metal atom / ion. Clear? Hello students, note कर लिए? Yes sir. Okay. 6 सर point. फिर से रिपीट कर दीजिएगा. अच्छा, मैंने बताया कि in the coordination sphere or entirety, there should be no space between the ligands and central metal atom / ion. दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए स्फीयर के बीच. ये पॉइंट बताया मैंने, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. 6 पॉइंट ध्यान देना, बता रहा हूं. सो रिगार्डिंग द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट,
Suppose in case the coordination entirety is mentioned without an encounter ion, बिना उसका अगर लिख दिया तो क्या होगा? Its charge, if any, is written outside of the square bracket. उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम चार्ज के रूप में ऊपर लिखते हैं राइट साइड में. फॉर एग्जाम्पल, जब देखिए इसको, इस पॉइंट को समझना है आपको. हाँ, हेलो. फॉर एग्जाम्पल, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस चार्ज हमने दे दिया 2 प्लस AgNH3 होल ट्वाइस 2 प्लस, या कौन लिख लो COEN का होल थ्राइस, EN इथेन 1,2 डाइएमीन होल थ्राइस 3 प्लस. सो बताया मैंने इस केस में कि जो चार्ज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर राइट हैंड साइड में, ऊपर हम लोग यहां मेंशन करते हैं, जो आपको आइडिया और पहले से है. सो मैंने बताया इन केस द कोऑर्डिनेशन एंटायरिटी इज मेंशन्ड विदाउट एनी काउंटर आयन, इट्स चार्ज इफ एनी इज प्रेजेंट देन द written outside of the square bracket as a right superscript. यहां लिखते हैं इसको हम प्लस चार्ज के रूप में, या जो चार्ज रहेगा हमने मेंशन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस राइट साइड में. दिस इज द पॉइंट नंबर 6. क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से बोलिए ना. नोट करना है, लिख लो. इन केस द कोऑर्डिनेशन एंटायरिटी इज in case the coordination entirety is mentioned without any counter ion, comma, its charge if any is written, its charge if any is written outside of the square bracket, outside of the square bracket as a right superscript, as a right superscript with the number before the sign. Clear? And the last point is very simple. The charge of cation is always balanced by the charge of anion. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बैलेंस करता है नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज. So the charge of cation is balanced by the charge of anion. So these are the important points how to write the formula of mononuclear coordination entities. And after writing the formula of mononuclear coordination entity, the next job is to name these complex compound. अब इनका नेमिंग कैसे लिखेंगे according to IUPAC nomenclature, which I am going to discuss now. So how to write name of the complex compound according to IUPAC system. So nomenclature of coordination compound
according to IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry System. इस बेसिस पर कैसे लिखेंगे नेमिंग तो मैं बता जा रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट रूल्स को ध्यान रखिएगा. So rules number first I am going to discuss. If you want, अगर चाहते हो तो नोट करते जाना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये. First point, in the ionic complexes, the order of naming is cations, comma, a species enclosed in coordination entirety, followed by anions if any present. याद रखिएगा. फिर रिपीट कर रहा हूं मैं सर, एक बार फिर से बोलिए सर. हाँ सर लिखे नहीं सर. ठीक है लिखो. रूल नंबर फर्स्ट, इन द आयनिक complexes, in the ionic complexes, the order of naming is cations, comma, a space enclosed in coordination entirety, a species enclosed in coordination entities, followed by anions if any present. Followed by anions. सर फिर से रिपीट कीजिएगा. अभी बताया मैंने कि इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द ऑर्डर ऑफ नेमिंग इज, पहले केटायन लिखेंगे, देन द कॉमा दीजिए, उसके बाद बताया कि स्पेस इनक्लोज्ड इन कोऑर्डिनेशन एंटायरिटी फॉलोड बाय एनायंस. केटायंस पहले आएगा, देन फिर अगर केटायन एनायन प्रेजेंट है तो उसको लिखेंगे. पहले केटायन को सोचना है. सेकंड पॉइंट जो बता चुके हैं आपको, ligands are arranged and named in an alphabetical order. नोट कर लीजिए. Second point is very important. Ligands are arranged. Ligands are arranged and named in an alphabetical order before the name of the central metal atom / ion. Again repeat it. Ligands are arranged and named in an alphabetical order before the name of central metal atom / ion. Central metal atom के पहले लिगेंड्स के नाम को अरेंज करके लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, केयरफुली सुनना बालक इसको. थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपका. नेमिंग द लिगेंड्स. डालो हेडिंग. थर्ड पॉइंट इज नेमिंग द ligands. The names of anionic, neutral and cationic ligands are written as follows. कैसे लिखते हैं वो देखिए. एनायनिक लिगेंड्स का, न्यूट्रल का और कैटायनिक लिगेंड्स का उससे कुछ रूल्स हैं मैं बताना जा रहा हूं. एट फर्स्ट पॉइंट फॉर एनायनिक लिगेंड्स, first point for anionic ligands. First point, anionic ligands.
लिखो वाला को रूल को हम बोल रहे हैं। सो एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विथ IDE, एनायनिक लिगेंड्स ending with IDE are named by replacing that is E by O, लास्ट का IDE का E जो है रिप्लेस हो जाएगा O से। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो। सो इन ID सफिक्स में लास्ट का E रिप्लेस्ड बाय क्या होगा? O के थ्रू। नोट कर ले इसको। हेलो, यस सर। हाँ, फिर सुन लो। एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विथ IDE रिप्लेसिंग E by O। मैं लिख रहा हूं सबका नाम, नोट कर जाइएगा। फर्स्ट यहां लिखिए आप एनायन, यहां लिखिए आप सिंबल, और यहां लिखिए आप नेम एज लिगेंड। एनायन, सिंबल एंड नेम एज लिगेंड। फर्स्ट लिखिए क्लोराइड, क्लोराइड Cl माइनस, क्या हो जाएगा इसका? क्लोराइडो। देखो बालक, इसका ओल्ड नेम था क्लोरो ब्रोमो होता था, बट अब लिखाना है IDE को IDO के टर्म में। सो क्लोराइडो, ब्रोमाइड Br माइनस, ब्रोमाइडो, साइनाइड Cn माइनस, साइनाइडो और साइनो दोनों लिख सकते हो। फोर्थ नंबर ऑक्साइड O2 माइनस, ऑक्सो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, हाइड्रोक्सो। अब लिखो सल्फाइड H2 माइनस, सल्फाइडो। नोट कर लिया इसको। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखो एमाइड, एमाइडो। ऊपर से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। सर एमाइड का सिंबल क्या है? NH2 माइनस, एमाइड NH2 माइनस, एमाइडो, AMIDO, एमाइडो, NH2 माइनस होता है सिंबल। ठीक है, एक और लिख लो नाइट्राइड N3 माइनस, नाइट्राइडो, NITRIDO। यह हुआ एनायनिक लिगेंड्स में जो लास्ट में IDE है वो चेंज हो गया IDO में। अब अगर ITE है या ATE है तो क्या होगा बताने जा रहा हूं उसका। मिटाएं इसको। Yes, sir. यस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बालक, इसको ध्यान रखना।
नोमेनक्लेचर के लिए। हाँ ध्यान दो, नोट करो। लिगेंड्स whose names end in ITE, whose names end in ITE or ATE, ITE or ATE becomes ITO and ATO. ITE becomes ITO or ATE becomes ATO. Other words, you can say that by replacing the ending E with O, last का E को replace कर रहे हैं हम O के थ्रू, याद रखना इसको। Replacing E by O, ध्यान रखना। ITE से ITO, ATE से ATO हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब नोट करोगे, मैं बता रहा हूं नाम। यस, कार्बोनेट। देखो लास्ट में है ATE, सिंबल CO3 2 माइनस, ये हो जाएगा कार्बोनेटो। लास्ट का ATE बदल गया ATO में, कार्बोनेटो। ऑक्सलेट, C2O4 2 माइनस, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, ऑक्सलेटो। सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेटो। नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्रेटो। नाइट्रेटो। नेक्स्ट मैं बताया था NO2 ग्रुप का अगर बॉन्डेड थ्रू O होगा तो नाइट्रेटो O, बॉन्डेड थ्रू N होगा तो नाइट्रेटो N। मैं पहले दिन डिस्कस कर चुका था इस चीज को। क्लियर? हेलो, यस सर। नोट कर लिया आप यस लोग? सर। इसको इरेज करें? यस सर। Okay. यस सर। Now, second point, I'm going to discuss regarding the name of the neutral ligands. उसको कैसे लिखेंगे? Neutral ligands. Second point for neutral ligands. इसके लिए देखो, certain neutral ligands are named as the molecules while others are named differently. कुछ तो लिखते हैं molecules के फॉर्म में ही, कुछ को अलग ढंग से लिखते हैं। So पहले देख लो ligands which are named as molecules. Ligands which are named as molecules. यहां ध्यान दो बालक। फर्स्ट इथेन 1,2-diamine, इथेन 1,2-diamine, जिसका फॉर्मूला मालूम है सबको ना? इथेन 1,2-diamine, इसका सिंबल होता है EN, एब्रिविएशंस है, जान लो। एक पहले लिखते थे इसको हम लोग प्रीवियसली EN के फॉर्म में,
अब कहता है कि इथेन 1,2 डाइमीन यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। फॉर्मूला होगा CH2 NH2 एंड NH2, यह है डाइडेंटेट लिगेंड। तो इसको ऐसे मॉलिक्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिरिडीन, पिरिडीन सिंबल इसका PY, पिरिडीन PY C6H5N, ये सब एज ए मॉलिक्यूल यूज हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट है हायोयूरिया, सर पिरिडीन का आप क्या लिखे सेम हैं? क्या बोले सर? PY सिंबल है, फॉर्मूला C6H5N, कैपिटल N है, C6H5 कैपिटल N। हायोयूरिया के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं TA, याद रखना, हायोयूरिया के लिए TA फॉर्मूला होता है NH2CS NH2CS NH2। So these ligands are used, are named as molecules। इसको इस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। इरेज करें इसको। सर CS है या CH है? नहीं, CS फॉर सन, NH2CS NH2 है, ठीक है, ओके। यस सर। अब बता रहे हैं लिगेंड्स व्हिच आर नॉट नेम्ड एज मॉलिक्यूल्स, उसको मॉलिक्यूल रूप में यूज नहीं करते हैं, कुछ डिफरेंटली यूज करते हैं, उसको देखिए। अब जो ज्यादा एग्जामिनेशन में वही पूछता है जो बताने जा रहा हूं आपको। यस, ligands which are not named as molecules, ligands which are not named as molecules, ध्यान देना बालक। फर्स्ट है लिगेंड H2O, क्या लिखते हैं इसका नेम? एक्वा, AQUA। For H2O we use the word aqua। NH3 amine, AMMINE। Students, be careful, in NH3 we use double M, AMMINE, amine। हेलो, यस सर। हाँ, याद रखिएगा लिखने में NH3 के लिए एमी लिखते हैं, डबल M। अगर एक MIN लिखिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा वो। तो वाटर के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन। नेक्स्ट है CO, ये होता है आपको कार्बोनिल, कार्बोनिल, CARBONYL। नेक्स्ट है NO, नाइट्रोसिल, NITROSYL, नाइट्रोसिल। नेक्स्ट एक और जान लो, CS, थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, etc। So these ligands which are not named as molecules, और ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ध्यान रखना। वाटर H2O, एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CS थायोकार्बोनिल, etc। क्लियर? यस सर।
नेक्स्ट देखो बालक, अब पॉजिटिव आयंस के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए। फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स, हाँ, फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए the names given to positive ligands end in IUM। देखना बालक, फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए हम यूज करते हैं IUM, इयम एज सफिक्स। याद रखना, फॉर एग्जांपल NO2 प्लस, इसके लिखते हैं नाइट्रोनियम। NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। क्लियर? नेक्स्ट है NH2 NH3 प्लस, NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। अगर H3O प्लस रहा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम। सर हाइड्रोजीनियम का एक बार सिंबल सर एक बार NH2 बोलिएगा तो। NH3 प्लस चार्ज, NH2 NH3 प्लस चार्ज पॉजिटिव, हाइड्रोजीनियम, HYDRAZINIUM। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये हुआ लिगेंड्स के लिए बालक। अब हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 या 5, जो भी पॉइंट होगा आप डाल देना। अब बालक नेक्स्ट है, जो भी रूल होगा डालना, 4 नंबर 5 जो भी हो। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। दैट द पॉइंट, numerical prefixes to indicate the number of ligands। लिगेंड्स के नंबर को इंडिकेट करने के लिए कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, you have already know if there are several ligands of the same type, then the prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa, these are used to indicate the number of ligands of that type। क्लियर? अगर मान लो कि एक ही तरह के बहुत से लिगेंड हैं तो क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स हम लोग? 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा एंड सो ऑन।